Hello friends, in the last class we have discussed few of the typical circuits and how to find the equivalent capacitance of that circuit. I think you must be benefited too much, and if you found the topic to be interesting, if you found the circuit to be interesting, if you found the concept to be interesting, just like it, share it and subscribe it. Today we are going to deal with the capacitance of the capacitor with dielectrics. Let us start. Dielectric. Capacitor with dielectric. What happens? Let C naught capacitance of the capacitor with air or vacuum between the plates. K, dielectric constant of the material filled between the plates. So, the capacitance of the capacitor with dielectric will be K times the capacitance of the capacitor with air. We can write variation of different parameters with dielectric in capacitors. Case 1. When battery remains connected, across the capacitor, means it is like C V. What is C? C is equal to K C naught. K is dielectric constant of the material. So the capacitance of the capacitor increases. Second, V is equal to V naught. Because battery remains connected, it will not change at all. Third, Q is equal to CV. So we can write K C naught into V naught or K Q naught. Q is equal to K Q naught. Charge on the capacitor will increase. Fourth, E is equal to E naught. Fifth, U
half CV square is equal to half K C naught V naught square is equal to K half C naught V naught square is equal to K U naught. Means U is equal to K U naught. Means potential energy of the capacitor increases. We can go for one more. Potential energy density U is equal to half epsilon naught E square. Okay. So what you see, it is half epsilon naught E naught square, that is U naught. U equal to U naught. So whatsoever is there in the box, they are really very, very important. One thing to keep in mind. And this parameter will change when battery remains connected in this way. यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. Fine. Case 2. When battery is disconnected, across the capacitor, now let us discuss the same thing when battery is disconnected. अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी को हटा दिया है, तब क्या होगा? मीन्स ये कैपेसिटर, दिस इज ओपन, दिस इज V, दिस इज C. स्विच को खोल दिया. फाइन. फर्स्ट इज C is equal to K C naught. Capacitance will increase. Second, Q is equal to Q naught. Third, V is equal to Q by C. यानी Q naught by K C naught हम लोग लिखेंगे 1 by K into C naught. That is V equal to V naught. V naught by K. आपका potential difference, it will decrease. Now, fourth is E. E is again V by D. So, it will be E naught by D. Or E naught by K. It will decrease. E will again decrease. यहां से हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी U हाफ CV स्क्वायर हमारा है हाफ C is K C naught, V is V naught by K whole square, or we can write half K C naught V naught square by K square. It will go off. So we can write U is equal to U naught by K. Therefore, the potential energy will decrease down. The potential energy will decrease. ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. और कई बार इससे डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछा गया है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इतना डालते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या अंतर पड़ेगा, चार्ज पे क्या अंतर पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या अंतर पड़ेगा.
ये डायरेक्ट ही पूछा हुआ है कई बार। अगर आपके पास थोड़ा सा ये ध्यान में रहता है तो न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने में बहुत ही सुविधा हो जाएगी। छोटा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग डायलेक्ट्रिक के साथ। कैन आई मुझे निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फील्ड विथ n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तब क्या करेंगे हम लोग दो तीन तरह से करते हैं ताकि समझ में हमको अच्छा आना चाहिए। पहली बात, कैपेसिटर केस 1, कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर filled with a dielectric having dielectric constant K and thickness T. We have the capacitance of the capacitor having the separation between the plate is D and the dielectric is filled to a distance T. So this is D minus T. Okay. We are required to find the equivalent capacitance of this. This is the simplest one. अगर इसको हमको समझ में आ जाता है तो इसके बाद हम लोग n पुट कर सकते हैं, n number of dielectrics we can put. You see, we have Q by C is the C equivalent, is equal to Q by C1 plus Q by C2. होगा 1 by C is 1 by C1. That is Q by C is equal to, or go for directly, 1 by C is equal to 1 by epsilon naught A K epsilon naught A by T plus 1 by epsilon naught A by D minus T. कोई दिक्कत? हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे 1 by C is equal to 1 by epsilon naught A 1 by K by T plus 1 by D minus T. कोई दिक्कत? हम लोग सीधा लिखेंगे C is equal to epsilon naught A upon K by T plus 1 by D minus T. 1 by D minus. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत यह है कि आपका T थिकनेस तक ही है, यहाँ K by T है, देख लीजिए यहाँ 1 है, दिस इज K इक्वल टू 1, यहाँ 1 है तो 1 अपॉन D minus T. कोई दिक्कत? नो, वेरी गुड. नाउ case 2, can I? We can go like case 2. Capacitance of the capacitor filled with n number of dielectrics.
dielectrics having dielectric constants K1, K2, K3, Kn and thickness T1, T2, T3, Tn and D equal to T1 plus T2 plus T3 plus Tn। कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये बस समझ लीजिए। वी कैन गो डायरेक्टली this is K1, K2, K3, K4, suppose Kn. So we can write it is of thickness T1, T2, T3, T4 and this is Tn. This, let us assume हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। We are required to find the capacitance of this sort of capacitor. N number of dielectrics are inserted between the plates of the capacitor. कोई दिक्कत? अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे और हमारा काम हो जाना चाहिए। What we see, they are all connected in series. One thing you should notice, they are all connected in series. Series means V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus Vn. कोई दिक्कत? Net charge flowing is Q, equivalent capacitance is C. So here Q by C1, Q by C2, Q by C3, Q by Cn होगा क्या? अगर ऐसा होता है तो we can write 1 by C, 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3, 1 by Cn. Okay? What is C1? 1 by C1 is K1 epsilon naught A by T1 plus 1 by K2 epsilon naught A by T2 plus 1 by K3 epsilon naught A by T3 plus 1 by Kn epsilon naught A by Tn। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, as I feel like। So we can write like 1 by C is equal to 1 upon epsilon naught A, 1 by K1 by T1, 1 by K2 by T2, 1 by K3 by T3, 1 by Kn by Tn। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो यहीं पर रोको मुझे। फील फ्री टू स्टॉप मी, आई टेल यू। नो, सो वी कैन प्रोसीड लाइक वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो C इज इक्वल टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई epsilon naught A by 1 by K1 by T1
फाइन, प्लस 1 by K2 by T2, 1 by K3 by T3, 1 by Kn by Tn। अगर ये हो जाता है तो हमारे पास हो गया C is equal to epsilon naught A upon T1 by K1, T2 by K2, T3 by K3 plus Tn by Kn। है क्या? T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3 Tn by Kn, है ना? इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा। और दिस इज द जनरल फॉर्मूला आई एम डिराइविंग, जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स फील इन दैट, एनी नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स फील इन दैट। ठीक है, अगर बात ये समझ में आती है तो कौन रोक लेगा आपको? यहां तक बात अगर ठीक समझ में आ गई है, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। वन थिंग। सेकेंड थिंग, लेट अस गो टू द वेरी हायर लेवल, जो जनरली हमारे सिलेबस में नहीं होता है, हमें कहीं नहीं बताया जाता है। ओपनली मैं बोलता हूं, कहीं भी देख लीजिए, ये सब चीजें जनरली डील नहीं होती है जो अब हम लोग डील करने जा रहे हैं। फाइन, कैन आई लेट अस नाउ डील विद फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर। फोर्स experienced by dielectric in the capacitor। क्या होगा? Suppose this is the length of the plate of the capacitor L. This is the width B. The distance between the plates is D. Now, a dielectric or dielectric constant K is inserted between the plates of the capacitor to a distance x. So this is L minus x. Is it? We have now two capacitors. One is C1, another is C2. They are connected in parallel, since the battery is still remain connected. So equivalent capacitance is C is equal to C1 plus C2. That is C is equal to epsilon naught A by D. What is A? A is the area. Area is L minus x into B by D plus K epsilon naught xb by d। होगा कोई दिक्कत? फाइन। सो वी कैन राइट C is equal to epsilon naught B by D L minus x plus kx, or epsilon naught B by D L plus K minus 1 into x, L plus K minus 1 into x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो हमको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। कैन आई
हमारे पास आता है F इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई टी एक्स होता है. व्हाट इज यू? u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. तो u हमारा हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स वी स्क्वायर. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सी का पोटी हाफ सी वी स्क्वायर की है ना. हमको चाहिए क्या? एफ. एफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स हाफ एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाई डी एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स होगा. एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स. यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट गो फॉर द डिफरेंशिएशन एंड वी आर फाइंडिंग दैट एफ माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाई डी 0 प्लस के माइनस 1. हम लोग सीधा लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाई डी 1 माइनस के. This is the force experienced by the dielectric when dielectric is being inserted into the capacitor. Now, हमारे पास है F is proportional to 1 minus K. बेसिकली क्वेश्चन जो आ रहा है वो रेशियो प्रोपोर्शन पे आ रहा है. क्वेश्चन जो आ रहा है वो रेशियो प्रोपोर्शन पे आ रहा है. यदि K का वैल्यू एक डाइलेक्ट्रिक का दिया हुआ है आपको, इसमें इतना फोर्स लग रहा है तो दूसरे में कितना लगेगा, इस टाइप में. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ K एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ F. ये आराम से मिल जाना चाहिए. कोई दिक्कत? फाइन. यहां तक अगर बात समझ में आई है तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड वन मोर लेक्चर ऑन दिस, दैट इज applying Kirchhoff's law in capacitors. कोई दिक्कत? Do you all agree? आपको चाहिए? अगर ये सारे बातें कुछ भी आपको नहीं मिल रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए और खुद बार बार देखिए ताकि आपके माइंड में ये बात सेटल हो जाए. कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको. एक बात सदा ध्यान रखिए, फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है और जो भी है अंडरस्टैंडिंग है. एक बार अंडरस्टैंड कर गए तो आपका काम हो गया. एक ही चीज से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, यू कैन मैनिपुलेट, यू कैन फॉर्मेट अ डिफरेंट थिंग. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग विथ Kirchhoff's law in capacitors. Thank you very much.